नमस्कार, आज हम बात करने वाले SLBM के बारे में। इमेजिन ओपनिंग योर पोर्टफोलियो वन डे एंड योर स्टॉक सेइंग, बॉस हमें भी कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई करा दो। साउंड्स वियर्ड, राइट? Because most people think stocks only make money in two ways, either price go up or you just receive a dividend. लेकिन असली गेम यहाँ खत्म नहीं होता है। There is actually a third way, a way where your shares can literally earn rent for you. हाँ, रेंट, भाड़ा। जैसे लोग अपना फ्लैट या शॉप भाड़े पे देते, वैसे ही यू कैन टेम्पररीली lend your shares and earn extra income from them. और ये ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। दिस इज प्रॉपर सेबी अप्रूव्ड एक्सचेंज बेस्ड सेटअप कॉल्ड SLBM। और ऑनेस्टली आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मालूम ही नहीं है कि ऐसा वैसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। याद दिला दूं कि पुराने ज़माने में इसको बदला सिस्टम के नाम से जाना जाता था, बट ये नए ज़माने का एक्शन ड्रिवन सेबी अप्रूव्ड मैकेनिज्म बोलते हैं। So in this video, let us understand what SLBM actually is, why trader borrow shares, how lender can earn from SLBM, risk involved and whether it is even worth doing or not. तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। SLBM stands for Securities Lending and Borrowing Mechanism। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बिकॉज फाइनेंस इंडस्ट्री को सिंपल चीज़ों को डिफिकल्ट नाम देना बहुत पसंद है, बट द कंसेप्ट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। You temporarily lend your shares to someone else and then they pay you a fee for using them. बस simple। समझिए ऐसे, suppose you own many four-wheelers, your friends need it for 10 days. You give it to him. Later, he returns it with extra petrol plus some money. Exactly the same thing happens here. Instead of four-wheelers, we are talking about SBI shares. अब एक अच्छा सवाल आता है, why would someone borrow shares in first place? Because traders don't only make money when the stocks go up. कुछ traders तब पैसा बनाते हैं जब मार्केट गिरता है। This is called short selling. Let us understand this with a simple example. Suppose SBI is trading at rupees 800. Mira, our trader friend, believes SBI stock is going to fall. She doesn't own the shares, but what does she do? She borrows 100 shares through SLBM, then immediately sells them in the market at 800 rupees. Now imagine after 1 month SBI fall to rupees 750. Mira buys back those shares at lower price, then return them and keep the difference as profit. 800 रुपये पे मीरा ने शेयर बेचा, 750 हो गया है, तो 50 रुपये का मुनाफा हुआ और शेयर्स भाड़े पे लेने के लिए उसने जो फीस चुकाई है वो उससे डिडक्ट करके जो भी पैसा बनता है उसको नेट प्रॉफिट कहा जाता है। सिंपल लॉजिक, बोरो शेयर्स, सेल हाई, बाय लो, रिटर्न द शेयर्स, कीप द प्रॉफिट, इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। नाउ लेट्स मीट एजे। एजे इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मीरा। ही इज नॉट ट्रेडिंग एवरी डे, ही इज नॉट स्टेयरिंग एट चार्ट्स एट मिडनाइट और न ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मार्केट कमेंट्री देखता है। एजे इज सिंपली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ही bought SBI shares and plan to hold them for years. So most of the time his shares are sitting idle. और एजे सोचता है जब शेयर वैसे भी होल्ड करने हैं तो क्यों उसे एक्स्ट्रा कमाई नहीं की जाए। So he decided to lend them through SLBM. Now let's see how this actually works step by step. AJ on 100 SBI shares. SBI shares is trading at rupees 800. Total market value is rupees 80,000. Mira wants to borrow these shares. So AJ tells Pravin Ratilal, I want to lend my shares. He asks for rupees 5 rupees lending fees per share. Mira agrees. The exchange matches both the orders. And when the matches happens, AJ's shares temporarily move to Mira only via exchange platform. Now Mira can use those shares for trading. At the end of the contract, Mira returns the shares, pays the lending fees. AJ earns extra income. In this case, rupees 5 lending fees per share. So 100 SBI shares, 5 rupees per share is equal to 500 income. So AJ earns rupees 500. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एजे ने अपने शेयर्स बेचे नहीं है। ही स्टिल रिमेन्स द ओनर बिकॉज दिस इज नॉट अ टाइटल ट्रांसफर, दिस इज टेम्पररीली लेंडिंग। अब बहुत लोग पूछते हैं डिविडेंड का क्या होता है, बिकॉज टेक्निकली समवन एल्स इज होल्डिंग द शेयर्स टेम्पररीली एट द टाइम ऑफ record date. Here is the good part. Dividend still belongs to the original
owner. Here, in this case, lender. Exchange automatically handles the adjustment by debiting the borrower and crediting the lender. तो borrower dividend लेकर भाग नहीं सकता है. Similarly, if there is a stock split during the lending period, exchange adjusts quantity of shares so your ownership remains protected. But in the case of right issue, SLBM contract get foreclosure with its proportionate fees to the borrower and shares will be received by the lender before the record date. So rights of a lender in this case is also protected. Or honestly, this is what makes SLBM very interesting because now your stocks can potentially give you capital appreciation without title transfer. So no worry about long-term, short-term gain loss, dividends and lending income. एक ही इन्वेस्टमेंट तीन तरीके से कमाएं. Now the next obvious question is how much money can you actually make? और यहाँ थोड़ा रियलिस्टिक रहना जरूरी भी है. Price is discovered as demand and supply. This is like over and above dividend. और याद रखिए ये इनकम उन स्टॉक से आ रही है जो आप ऑलरेडी लॉन्ग टर्म से होल्ड करते और करना चाहते भी है. बट देर इज ऑल्सो रियलिटी चेक. देर आर मेनी लेंडर्स इन द मार्केट and few borrowers, which means demand matters a lot. Some months you may earn good lending fees, some months there may be very little demand. So this is not a fixed monthly income. जब जिसने शेयर रेंट पे दिया है और सेल करना चाहते हैं तो अब याद आए ना ये जिन्हें ₹5 में शेयर रेंट पे दिया था और अब उसको बेचना है तो रिकॉल करने के टाइम उसका प्राइस SLBM में ₹6 है. एजे को एक्स्ट्रा ₹1 दे के शेयर वापस मिल सकते हैं और कुछ नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने तक शेयर्स विल गेट क्रेडिटेड बैक टू हिम ऑटोमेटिकली विदाउट स्पेंडिंग एनी एक्स्ट्रा. और रिकॉल में कोई भी नया लेंडर आके ये ट्रांजेक्शन कर सकता है. रिमेंबर वन थिंग, दिस इज एक्सचेंज बेस्ड सेबी अप्रूव्ड मैकेनिज्म सो ईच ट्रेड काउंटर पार्टी इज स्टॉक एक्सचेंज, हेंस नो रिस्क ऑफ लेंडिंग इन SLBM व्हाटसोएवर. रिस्क टू borrower. Suppose Mira expected SBI share to fall from 800 to 600, but instead the stock rises sharply to 1200. Now she is making losses on that trade. Let us understand how. Share price was 800 when she sold the shares. Share price when it has to be bought from market and to return it to lender at 1200. So losses come to ₹400 per share plus lending fees paid to AJ. So is equal to 405 loss per share. 100 share is equal to 40,500. Now coming to taxation part. हाँ जी, गवर्नमेंट का शेयर तो हर जगह होता ही है और उसे वो हमारे लिए तो स्पेंड करते हैं. फॉर लेंडर द लेंडिंग फी इज treated as income from other sources. For borrowers, trading profit are taxed as business income. So, who should actually use SLBM? Honestly, it works best for long-term investor, people who don't trade frequently, people who want to short sell the stocks if they don't own it. अगर आप कोई भी शेयर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, then SLBM is not ideal for you. Now, if you want to start with SLBM, you can check SLBM approved stocks on the exchange website and contact Pravin Ratilal. So, here is the final takeaway for you. SLBM will not make you rich overnight. लेकिन हाँ, SLBM is definitely a smart way to generate better returns from your stocks you already own. Or honestly, most investors don't even know this feature exists. इसीलिए ऐसे कंसेप्ट समझना मार्केट में एडवांटेज देता है. Because over the long term, small returns compounded properly can generate huge alpha. So tell me in the comment section, would you like to lend your shares and generate extra income? अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो शेयर दिस वीडियो विद समवन हु स्टिल थिंक्स स्टॉक मार्केट ओनली मीन्स बाय लो सेल हाई. सी यू इन द नेक्स्ट वन. Subscribe to this channel for more such interesting content. Till then, happy compounding.